अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक रिएक्शन वीडियो बना रहा हूँ ग्रैंड फाइनल के ऊपर, जो वर्ल्ड कप अभी लेटेस्ट हुआ है, आतिफ भट्ट वर्सेस उल्सन, उसके ऊपर। तो मुझे काफ़ी लोग पूछ रहे थे ग्रैंड फाइनल के बारे में, मुझे मैसेज कर रहे थे लोग कि आप क्या कहते हैं इसके बारे में, आतिफ कैसे हारा है और आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या कहते हैं क्या होना चाहिए था। तो मैंने काफ़ी लोगों को रिप्लाई किया, लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं इसके ऊपर एक रिएक्शन वीडियो बनाऊं और मैं अपना भी ओपिनियन दूं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो नो डाउट आतिफ ने बहुत अच्छी गेम की है और बहुत अच्छा प्लेयर है आतिफ। तो बस मिस्टेक हो गई है, कुछ मिस्टेक की वजह से वो हारा। और हो जाता है ऐसे मामले, ऐसी स्टेज पर आके इंसान थोड़ा प्रेशराइज भी हो जाता है और खेलने में मुश्किल भी होती है। तो मेरे ख्याल में अगर हम में से भी कोई होता तो शायद हमारे से भी परफॉर्म ना होता, क्योंकि सबसे बड़ा जो इंसान की नज़र में जो सबसे बड़ा प्रेशर होता है ज़हन में, वो प्राइज़ मनी होती है। तो जब बंदा इस स्टेज पर पहुंच जाता है तो उसको इसी चीज़ की टेंशन लगी रहती है कि यार इतना बड़ा प्राइज़ है, मैंने ये जीतना है, मैंने ये जीतना है। तो वो जब उसका फोकस उसके ऊपर हो जाता है तो वो फिर अपनी पूरी गेम नहीं कर पाता और अपना पूरा बेस्ट नहीं दे पाता। नो डाउट बाकी आतिफ बहुत अच्छा प्लेयर है, उल्सन भी अच्छा प्लेयर है। तो मुझे ये लगता है कि आतिफ ज़्यादा अच्छा प्लेयर है, ज़्यादा डिज़र्विंग है उल्सन से। बाकी आपको क्या लगता है आप भी कमेंटों में बताना। तो मैं ये वीडियो रिएक्शन दूंगा इसके ऊपर, कुछ चीज़ें मैं गाइड करूंगा, बताऊंगा। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी और आप इंशाल्लाह मुझे कमेंटों में लाजमी बताएं। Things off. Here it is, the grand finals of the Esports World Cup. Atif versus Ulsan. And it First is to five. definitely a dragon off match. All right, here we go. It's a race to five, Steve. All right, here we go. Oh, wow. The third dimension coming into play already. And a crazy life lead. Half-life already gone, gets the clean launcher. Atif making his presence known already with a clean, full life bar up there. Let's see if Ulsan can turn his first rounder around at least. Never mind. We're going to start it off with a perfect, and that is not a good way to go into this grand finals. I mean, Atif has momentum. He just got off the sticks last, right? So he's warmed up. He's good to go. Look at this step again. This is exactly the way he got the launcher in the last round. Side step down forward two. Here comes the combo. This time off-axis combo, so not going to get as much damage out of it. Well, look, I'd say, if anything, one thing you can take away from this match is just, you know how to fight Dragunov towards the end. Atif doing a lot of sidestepping to get around some of these big moves that we've seen be so effective in this game throughout this entire EWC. And he's literally just dancing around Ulsan in some of these situations in another round on the board. Once again, it is first to five, but Tekken 8 is a fast game. Blink and you might miss it. Blink and you might get hit. Blink and you might miss a match. I think I blinked. But right now, Atif, think about his aggression, right? Obviously, very good offense. Everyone expects him to be hitting buttons a lot. But you'll notice in that last round specifically, it was a double backdash that got him out of there. So he has really quick backward mobility as well. All right, let's talk about these jabs, man. The way that Atif kind of sets his offense with these jabs, knows exactly when to place these heat bursts. Wow, goes for the tackle. Great break. Oh, nice heat smash of his own. Not going to be the end of the round. Ulsan trying to make something happen in this first game, and that's going to be one round on the side of Ulsan. That back 4-3 from Dragunov. We've seen it all day, all tournament long, perhaps. But, oh, wow, there you go. Sidestepping and actually getting the punish on the running, too. So many other players, when it goes past it, they're unable to chase it down and get the full punish. Kind of reminds me of that 3-2 Asusena, man. That's what it kind of reminds me of. He can punish him, but you got to call it out correctly. Yeah, that was well played. But right now, Atif, big lead, looking to close out game number one. Got the down two. Ulsan challenges on the frames. I like the bait right there. Oh, right in the side of the neck. Big damage coming up. And rage. Plus, he's going to get back the rest of his gray life. Puts himself in heat. He's trying to close out on this next series. And he can if he does it properly. Takes the Oki. He blocks it and goes for the heat smash. We're tied in this first game of Grand. आई थिंक मुझे लगता है कि आतिफ की मेन वजह जो हारने की थी, वो मुझे जो नज़र आया, जो मैंने इसको एनालिस किया, वो ये था कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव खेल रहा था आतिफ। तो बस ब्लॉकिंग नहीं थोड़ी कर रहा था कि वो क्या यूज़ कर रहा है, वो क्या मार रहा है। अगर वो थोड़ी ब्लॉकिंग कर लेता तो शायद ये बीट कर लेता। तो उल्सन बहुत ज़्यादा रुक के खेल रहा था, वो सिर्फ गलती देख रहा था कि ये किधर मुझे विफ टैग देगा तो मैं इसको लॉन्च करूं या मैं इसको पनिश करूं। तो अगर थोड़ा सा आतिफ रुक जाता तो शायद ये जीत जाता। ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव खेला है और बहुत ज़्यादा इसने अटैकिंग की है। Finals. It didn't look like it was going to end up with the final round for game one, but here it is. Counter and throw broken. Hands off, bro. 1-2. Running two with the pressure now. Nice. Yeah, again, Ulsan challenging with while standing forward after getting hit by that down two. Got to watch out for that. Oh,
Artem's gonna be able to step afterwards in case, and they both try to step there that time. One of the things I was talking about, nice launcher, I was talking about when CBM was fighting Atem. He wasn't using down forward one with Jin. And we're looking at Ulsan uses down forward one with Dragunov. Making sure he stays right in front of him, gives you a chance to kind of react to its sidestep and make Atem or Dragunov change his approach, but here we go. Gotta watch out, Artem's a lot of heat. Beautiful timing. सबसे बड़ी जो गलती कर रहा था ये आतिफ इसके अगेंस्ट, ये विफ टैग बहुत ज़्यादा दे रहा था उसको, तो वो विफ के ऊपर बहुत ज़्यादा पनिश कर रहा था। तो उल्सन की ये चीज़ बड़ी अच्छी है शुरू से कि वो विफ पनिश बहुत अच्छी करता है। वो चाहे कोई भी करेक्टर खेल रहा हो ना, तो इसकी विफ पनिश बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो मिस नहीं करता। और आतिफ इसको विफ बहुत ज़्यादा दे रहा था और वो पनिश कर रहा था। और दूसरा बैक 4-3 वो हीट में, जैसे ही वो हीट में आता था तो वो बैक 4-3 आतिफ उसको मार रहा था, तो वो हर दफ़ा उसको हाई कर रहा था। And spacing there, got Atem to do the 1-2 first, and got the whip punch there. And this is the thing that's crazy though. The CBM did it double. Say the same. Usually close this out. I am afraid of fighting Atem. I do not want this to go on longer than it needs. However, the way he did it was impressive because he came back from a two-round deficit. Didn't duck the back 4-3 that time. That's the thing. Atem, he's free with the back 4-3 because rarely do people actually duck and punish it. अच्छा, एक चीज़ और मैं उल्सन की यहाँ बता देता हूँ। तो उल्सन का जो स्टाइल है ना, वो यही है, वो बड़े छोटे फ्रेम पे गेम खेलता है, वो बड़े फ्रेम पे गेम नहीं खेलता। ये सेम वो गेम प्ले अपना कज़ूमी वाला कर रहा है। जब वो 7 में कज़ूमी भी खेलता था ना, तो वो 10 फ्रेम पे बहुत ज़्यादा गेम प्ले करता है। 1 खाली डिग जैक बहुत ज़्यादा लगाता है, यूज़ करता है, फिर जैब बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, खाली 1-1 मारता है, 1-2 मारता है, तो वो ओपोनेंट को ना इसके ऊपर रोकता है। और जब वो ये हिट मारता है ना, तो इसके अंदर ये फजी गार्ड बहुत ज़्यादा करता है। अगर कोई ये वाली हिट के बाद उसको कोई हिट मारता है तो ऑटो वो इसके बाद फजी गार्ड करता है। अगर लो होती है तो वो पैरी हो जाती है, और अगर मिड हो तो वो सेफ़ हो जाता है। तो वो अपना वही वाला गेम प्ले ड्रैगनव के साथ कर रहा था। तो वो आतिफ इससे थोड़ा प्रेशराइज हो गया था इस चीज़ को लेके कि वो एक, क्योंकि ड्रैगनव के जितने प्लेयर हैं वो बड़ी गेम करते हैं, छोटी गेम नहीं करते। तो ये छोटी गेम कर रहा था, तो इसने बहुत ज़्यादा इसे प्रेशराइज़ किया। I feel like he ducks and punishes it more than most people, right? That back 4-2's got you there in case you don't want to duck. There he is, getting hit by himself. Back four, gets the heat dash on top of it to the wall. Not the explosion one. Oh, you're gonna get up onto his wall though. Bing, bang. Still alive though. Still alive though. Misses the down 4. Uh-oh. Okay, down 4-1. Once again, down 4-1's great check options. And like I was waiting for other players to do this. Ulsan the only one taking charge of it. Once again getting around, using the third dimension. But Dragunov don't care. He's moving forward. He's trying to make sure you don't catch him if you get around him. And yeah, the pokes from Ulsan. Earlier in the set with Yagami, he said, he said that he realized he needed to use more of his poke game. Wait a minute, this round is coming to a close. Ulsan might take the lead in the set. And look at this, 2 rounds in this second game for Ulsan. Once again, I'm not counting out Atif just Hell yet. no. My man is right there in the side view mirror. 1-2-1, engage. This is what Atif's landed all night long, all tournament long. 1-2-1 engager. Mike says he looks like he just finds it as a natural combo. Not even counter required the way he does. There it is again. Nice 1-2-1 dash spends all his resources. Got him. Like I said before, Atif is not out of the running yet. Objects in the mirror are closer than they appear. 2 rounds to 1. Atif still fighting back. And he was creeping up on him after round 2. Here we go, round 4. Down 2 right back at it again. Ulsan challenged the Walton 4 afterwards. And those down 2s, he finally gets around it. And like I said, Atif is the only person that has been successfully punishing that. You got to practice that. It's so difficult, especially because it's a engage. And spacing matters. Oh, the down 2s. They're adding and tries to fight back. Ulsan with the rising 2 to the wall. Not going to get that wall explosion, but you're going to get back up on this wall. Yeah. अच्छा, डाउन 2 के बाद मुझे ये नहीं समझ आती कि ड्रैगनव माइनस में होता है, तो उसने फिर भी अपना वाइल्ड 2 अन्नेवा निकाल दिया। तो मेरे ख्याल से उसे पता था कि ये कोई ट्रिपल फॉरवर्ड 2 मारेगा या कोई रिस्पेक्ट दे के हिट मारेगा। तो इस लेवल पे अगर कोई इस तरह की हिट लग जाए तो बंदे को बड़ा अजीब सा महसूस होता है, फील होता है कि ये क्या इसने हिट यूज़ की है। तो कोई भी हो तो वो थोड़ा माइंड चेंज होता है। तो ये बड़ी अजीब उसने हिट यूज़ की है इसके लिए। Oh, didn't even need the combos enough damage. 3 rounds to 1. Look at CBM. Look at him. This is South Korea in the lead. Wow.
This is wild. And Ulthar with the counter and wants to start it up. And the crowd with the let's go Atif as he gets combo to the wall. Big damage. Holy Ulsan in the damage. lead. Ouch. Do it again. Oh. Do it again. No more. Oh, engage. Atif says, I've had enough. I've had enough. Big damage here. Full combo on the wall. Ridiculous. Ridiculous. Heat dash. 1-2. Kind of priming it. Spins the heat dash. One thing about Atif, I've been noticing this entire tournament. He has no problem fighting without heat. Oh. Well, it's Dragunov. Get it out of here. Parry. Atif answering back. All he's got is rage and a dream. I mean, rage is plenty in this game. Especially with Dragunov, it's enough damage. Oh my gosh. Rage, you don't need a dream. You just need the rage. Forget the dream. Rage. The rebel And the hang. crowd is getting crazy out there. Oh. On a little hesitation, man. Oh. Counter run into for Atif. Gets the blue one first. Gets the normal one for the counter hit. Big damage on the board. Atif The backboard two string this time. trying to close the gap. Trade. That's still going to be a combo. Atif with the Is awareness. he dead? No. Chance. Chance pulls out. He ducks the high. No wall splat. Wall splat. Still has heat though. Gets countered by the smash. And just like that, Atif up 2-0. Oh no. 2 rounds though. 2 rounds in this third game. Ulsan is up 2 games, but still, this is a race to 5. This is how the first game started. अच्छा, जैसा कि मैंने आगे बताया कि ये वही सेम टू सेम कुजुमी वाला गेम प्ले कर रहा है, तो अभी भी वो वही गेम कर रहा है, न्यूट्रल 1 डाउन फॉर 1 और उसके बाद वो साइड ले लेता है और वो गेस करता है कि ओपोनेंट ने क्या हिट यूज़ किया, तो वो उसके अगेंस्ट वो वाली फिर पनिश करता है और वो गेम प्ले करता है उसके अगेंस्ट। तो अभी भी पूरा राउंड ये मैं देख रहा हूँ, आधी पावर वो ले गया, खाली वो डाउन फॉर 1 मार करी और 1-1 लगा रहा है और उसने इसी के ऊपर इसको प्रेशराइज किया हुआ है। It's back. Ulsan made the comeback there. This time finds the first engager. Testing the highs. Atif ready for the ducks. He tries to sidestep, beats him with the down 2. What They're an answer. constantly keeping each other guessing right now. Spends the resources. This time, Ulsan pulling the trigger first on the heat. Atif with plenty of resources left. Has heat, also has this rage, but a lot of low life right here in the down 4. Ulsan keeping up the pressure, not giving Atif a chance. Exactly. Atif was trying to force that heat first situation there, and Ulsan was, no sir, I need this round right now. And the thing about Ulsan too, he's got the back this time. Off the Now 1-2. that's a punish. What we're gonna do here? Oh wow. It's okay, still enough damage off of that. Better than before. Out the hatchet, don't step. Homing attack power. Look out. Baited. We not gonna do it. Ulsan ties up this third game. 2 rounds, still in the lead with 2 games. Oh my Atif gosh. needs to get something on the board. Atif Or Ulsan is looks running so away. stressed. He looked down in a second and goes like, oh my gosh, I'm in trouble right now. And he recognizes it. Oh, look at this damage output here. Ulsan with a big life lead, keeping up the pressure. Tries to sidestep, met with a down 2. Here comes Atif with the offense. He's got the heat first. Atif's turn now perhaps, but both players have heat. Who's going to find the heat smash first? It's going to be Ulsan with the 3-round comeback again. He is up 3-0 and a huge smile across his face. And he's feeling good, jumping in the seat. The crowd is up on their feet. This is getting good. Ulsan looks so good. अच्छा, मैं एक यहाँ पे ये बात करना चाहता हूँ कि जब इंसान इस लेवल पे आता है ना, खेल रहा होता है, तो उसको माइंड चेंज करने के लिए ना पहला कॉइन कोई दूसरा करैक्टर, अपना साइड करैक्टर लेना चाहिए। मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि सबको पता होता है कि यार इसने ये खेलना है। जैसे कि अब मैं स्टीव खेलता हूँ तो सबको पता है कि मैं अगर फाइनल में होऊंगा तो मैं स्टीव खेलूँगा, लेकिन सबको ये भी पता है मैं फैंग भी खेल लेता हूँ, मेरा और भी करैक्टर है। तो इस तरह आतिफ का भी सबको पता है कि ये ड्रैगनव के अलावा जिन भी खेल लेता है और फैंग भी शायद, हाँ फैंग भी खेल लेता है, और भी इसके करैक्टर हैं। तो इसको चाहिए था माइंड चेंज करने के लिए ना करैक्टर चेंज कर लेता, क्योंकि ओपोनेंट ने आपका पहले ज़हन बनाया होता है कि यार ये प्लेयर खेलता है और इसका ये गेम प्ले है, तो मैंने इसके अगेंस्ट ऐसे ऐसे खेलना। वो आपके अगेंस्ट उसने पहले तैयारी की होती है। तो मुझे ये लगता है कि अगर ये एक आधा कॉइन चेंज कर लेता या पहला ले लेता या 2 कॉइन के बाद भी ये चेंज कर लेता तो शायद ये कमबैक कर सकता था, कोई मुश्किल नहीं है। और इंसान कंफ्यूज हो जाता है इस लेवल पे आके, वो अपना करैक्टर से परफॉर्म नहीं कर पाता, उसको समझ नहीं आती। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मिरर जो भी होता है ना, वो चाहे स्टीव वर्सेस स्टीव है, अगर मैं भी किसी से खेलूँ तो शायद मैं भी कंफ्यूज हो जाऊँगा, क्योंकि सेम गेम प्ले हो जाता है, सेम हिटें हो जाती हैं, तो वो जो आप यूज़ करते हो वो ही ओपोनेंट कर रहा होता है, तो इससे ना माइंड इंसान का ना थोड़ा कंफ्यूज होता है।
तो अगर मैं दूसरा प्लेयर लूँ तो मैं उसे इजी बीट कर सकता हूँ। इस तरह ही अगर आतिफ भी कोई दूसरा प्लेयर लेता तो शायद ये भी उसको इजी बीट कर लेता। मुझे ये लगता है कि ये करैक्टर चेंज करता तो ये कमबैक कर सकता था। Earlier, I said I'd never seen anyone 3-0 Arctic to make a comeback again. This game is so like that in this set to win this tournament. All right, 3 games, but remember, this is first to 5 more than anything. You still got 2 games to win. It is now first to 2 right here for Ulsan, but Atif right there. This is not out of his wheelhouse, like you said. Yeah, and Atif now slowing the pace down a bit, right? And a big block on the hatchet. There's the launch for Atif. Okay, here we go. Nice. Once again, early cash out on the heat for Atif. He likes having the heat pressure as well as just spinning it and just beating you clean with nothing left in the board. But here we go. Engage. Back 4-3. Here comes Ulsan now. Gotta watch out the Atif with the smash, but no, it's gonna be Ulsan again. He'll crush, destroy, stuck on the wall. He answers back with his own heat smash. We're playing good old-fashioned Tekken, but there's the rage. Down 2. They Big trade. block. What a punish. Oh, he stuffed the running too. And he was Down game. two. And he was my round. God, the down Atif. 2. Finally stops the bleeding. Atif gets a round on the board. This is game 4. You need more. With the rounds haven't mattered, right? He's had 2-round lead twice already. Finds the CD1 this time. Oh, it's coming, though. Oh, it's coming. Oh my gosh. Drops the combo on the wall. Those are the nerves. Blocks the low. Big launch. Let's see what Ulsan does. The wall is there, but now I know they're looking for that 4. Hey. Don't even need it, man. It's only gonna take 2. It's gonna find potential final round before that even matters. Oh, wait a minute. Both hit heat right now. Trying to find that 1-2-1. He Hits recognized the counter. He smashed off the step again. What a call out. This guy Ulsan returns the favor, gets around on the board. He beat him to the punch with the heat smash, and this time getting the tackle. Will he get the extension? Get off him. Got the counter hit, but it wasn't enough. Oh, Engage. goes to the forward 4. Atif now trying to mount some offense here. He's had a couple of strong rounds, but really, Ulsan's always regained control. Oh my God, that sneak into that raw rising 1-2. Counter hit, tackle again. He's successfully broken both With of the these. QCF4, doubled it up. Again. Oh my gosh. Ulsan looking at a 4-game run. No way, dude. Round. No way. 1-1. Engage again. Ulsan run away with a nice step in the wall stand too. Here comes Atif. Okay, Atif gets the launcher, and now let's see what he does. Cashes out with the heat, breaks the floor. We're going downstairs. A trip down memory lane. Oh no. Good Big block. Oh, what is this defense from Ulsan? Wow. Playing, it seems like I don't even know how you describe this. He's just playing so well. Give Down it to the the damn floor. bottom floor. And Ulsan still has heat. He's found the heat smash so many times in this situation. This time does not get it. Atif with the blocks. He's got rage and heat. Atif, can he close out here? Nice jab from Ulsan. Another one. And the down two. Oh, Oh my 4-0. अच्छा, एक चीज़ ये है कि वो बहुत ज़्यादा छोटी गेम से ना रोक रहा था। खाली 1 यूज़ कर रहा है और डोंफा 1 कर रहा है, सिर्फ 1 छोटी गेम कर रहा है। तो इस तरह की गेम के अगेंस्ट मुझे ये लगता है कि अगर इंसान खुद अगर इस तरह की छोटी गेम छोटे फ्रेम की खेलना शुरू करे ना तो फिर ओपोनेंट को इजीली टैकल कर सकता है। क्योंकि अगर आप बड़ी हिटों पे गेम कर रहे हैं और ओपोनेंट आपका वो छोटी हिटों पे गेम कर रहा है तो आपका मुश्किल होता है उसको उससे बीट करना। तो इसमें 2 ही ऑप्शनें होती हैं, या तो आप भी वो छोटे फ्रेम की गेम करो और जो वो यूज़ कर रहा है आप भी वही यूज़ करके उसको बीट करो, या फिर आप थोड़ा डिफेंस करो, थोड़ा ब्लॉकिंग करो। क्योंकि अगर आप कोई हिट नहीं मारोगे, रुक जाओगे, तो वो फिर खुद आपको कोई ना कोई हिट मारेगा, यूज़ करेगा। तो फिर आपके पास ऑप्शन होती है ब्लॉक करने की और उसको पनिश करने की। तो ये 2 ऑप्शनें होती हैं। Zero. Ulsan needs 1 more game. Look at him. He's 1 game away. Oh, pump. Look at him. That's true. It is. He has the character. He is, but we're counting out to Atif getting sanctum. man. 4 games to none. Ulsan with quite the lead. The crowd is involved. They're trying to power him up here. Oof, running 2. And after such a dominant performance here at EWC, this is just amazing. Like, Look at this damage. oof, the slide. And Ulsan he's just with Atif at every step of the way. But look at Atif bringing it back down, tying up the life. Jab there. It's not going to work out. There you Smash go. gonna work just fine. Gets the wall. Nothing comes from it, though. QCF4 is blocked. The and the rage- rage are think it's definitely fine. going to hit. Oh my He's God. definitely gonna- अच्छा, जब मैं ये लाइव देख रहा था ना टूर्नामेंट, तो ये ज़रा सी डैमेज पे उसने रेजार्ड इसको मारी है तकरीबन पूरी पावर की। तो ये मुझे वो सेम याद आ गया, वो लो हाई ने एक रेजार्ड मारी थी अवैस सनी को तो TWT में ना।
तो जब उसने कुमा का डबफा 4 मारा तो उसने भी शाहीन की रेज आर्ट मारी थी, तो वो तकरीबन इतना ही डैमेज लेकर गई थी, वो बहुत बड़ी रेज आर्ट थी। तो ये सेम वही वाली सिचुएशन है। He's probably dead. He stole the whole He's round. probably dead. Yo, Atif back on the board. Stops the bleeding. I told you you can't count him out yet. I told you can't count him He out yet. got the round. Oh my goodness, it's looking like Ulsan's tournament. Oh, God. Down to answer for the rage art. Atif looking a lot better. This is crazy. Atif looking a lot better. He's getting smoked still. Also, In the back, on the side, it doesn't even matter. This is crazy. down jab, down two. Back and forth. It's crazy. Sidestep once again. Olsan looking for something for Atif, but he did give it to him. Down 4-2. Clean launch here. There's Atif. There he is. He's trying to fight back. He still has heat. Here it comes. Extend the combo with it. Get to this hard wall break. Now you can find a heat fast. It's going to break it as well. Great. 1-2-1 though. No heat to activate. And look at his Ulsan in the back. Will the rage art hit? Oh It my does. God, that's gonna hurt. He's not dead though. He might be dead. I don't. अच्छा, एक चीज़ ये नहीं समझ आई कि ये रेज आर्ट कैसे लगी। अभी का ड्रैगनर जब ये अपना हिट स्मैश यूज़ करता है तो ये बहुत ज़्यादा दूर चले जाता है, यानी कि इतनी रेंज बन जाती है कि इसको अगर आप साइड भी ले लो तो इसको हिट कनेक्ट करना बहुत मुश्किल होती है। लेकिन उसने रेज आर्ट लगा दिया यहाँ पे, तो ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड था राउंड। I don't think he's dead though. Raw rage art hit. No combo. I don't think he's dead. Told you he's Oh, not dead. God. He's still alive. Atif. Whoa, what a dunk. But it doesn't matter. Tournament point for Ulsan. And CBM is on his feet right now. Down to Atif. Give me some more games. This Give is- me more games. Insanity right now. Ulsan, Half-Life our lead, and heat active. Down four. Look at this. Oh my God. That's more than a half-life lead. Commits to the 1-2-1. Ulsan, a series away from closing out. Becoming your EWC champion, the 1-2-1. He dash a guess away. Ulsan is your EWC champion of Tech. तो ये मैंने एक रिएक्शन वीडियो बनाई थी, आपको कैसी लगी आप मुझे लाजमी बताना कमेंटों में। और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं था कि मैं किसी को डिग्रेड करूं या किसी के बारे में कोई बात करूं। तो नो डाउट आतिफ भी एक अच्छा प्लेयर है, पाकिस्तान का टॉप प्लेयर है। तो ये मुझे काफ़ी लोग पूछ रहे थे इसके बारे में कि ये किस तरह का ग्रैंड फाइनल है। ये बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ा अपसेट है टेकन हिस्ट्री का। आज तक इस तरह का अपसेट किसी ने नहीं किया जो ये ग्रैंड फाइनल हुआ है, स्पेशली ये वाला। और भी प्लेयर हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि बैड लक है, इंसान की कभी नई गेम खेली जाती हो जाता है। तो बाकी आतिफ अच्छा प्लेयर है, तो ये नहीं कि वो इतना अच्छा प्लेयर नहीं डिज़र्व नहीं करता और वो हार गया तो ये हो गया। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। उल्सन भी नो डाउट बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत ही अच्छा उसने माइंड रीड किया और उसने आतिफ को बीट किया। तो इस स्टेज पे मैं ये कहूँगा कि एक प्रेशर होता है इंसान को प्राइज़ मनी का, और दूसरा जब मिरर हो तो वो मिरर खेलना बहुत मुश्किल होता है। वो चाहे कोई भी करेक्टर हो, वो टेकन का आप कोई भी प्लेयर ले लो तो मुश्किल होता है। तो आई थिंक मुझे लगता है आतिफ ने जो मिस्टेक किया वो ये थी कि अगर वो करेक्टर चेंज कर लेता, 5 कॉइन थे तो वो कम बैक कर सकता था और जीत सकता था। और मैंने वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए बनाई है जो मुझे मैसेजों पे या इनबॉक्स में जहाँ पर भी मैसेज करते हैं, तो मैंने उनके लिए बनाई है ताकि वो वीडियो देखें और मैंने अपना ओपिनियन दिया है जो मेरे जहन में था। तो बाकी आपको कैसी लगी है वीडियो आप मुझे कमेंटों में बताएं, और ये भी बताना नेक्स्ट वीडियो किस तरह की आप चाहते हैं। मैं कोशिश करूँगा मैं उस तरह की वीडियो बनाऊँ। तो अल्लाह हाफ़िज़।